from Evityati Church in. Today in this session we'll talk about the undo command. It is the fourth most used command in Word after copy, paste and save. So let's start and see how it works. Now this is my document. What I'm going to do is I'll just make a simple mistake and then correct it by using undo command. So if I click here and if I backspace and अब मैंने इतना पोर्शन रब कर दिया बट इफ आई वांटेड बैक सो आई कैन यूज द अनडू कमांड. कोई केसेस टूल बार में आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास बटन होता है, दिस इज द अनडू कमांड. फाइन. सो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो जो भी मैंने अभी मिस्टेक करी है वो फिर से करेक्ट हो जाएगी. और आई कैन ऑल्सो यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट दैट इज कंट्रोल Z. फॉर नाउ आई क्लिक इट and you will see just by a single click I can correct what I just made the mistake of. Now, similarly, if I add some text to this, now you will see इसके बाद मैंने इतना text add किया है. Again अगर मुझे इसे undo करना है, इसे remove करना है, so rather than selecting it, deleting it या फिर उसे backspace करने की जगह I'll simply press Control Z. So this is the shortcut Control Z से मैंने उसको undo कर दिया. Now this was about text. Now coming a little down, you will see I have this image. If I select this image and by mistake if I press delete, so you will see कि यहाँ पे जो image थी वो delete हो गई है. Now I don't need to go to insert again and put a picture. I can simply press Ctrl Z or I can click on this button. For now I'll press Ctrl Z and I'll get my image back. So now coming to the next thing, अगर मैं कुछ formatting apply करती हूँ, for example, if I select this much text and now if I apply some formatting, I'll click on bold, italic, underline and I can also change the color of this. If I change the color to this one, like this. Fine, so I have done this formatting. इसमें मैंने इसका color change किया है, इसे bold करा है, text को underline किया है and italic किया है. Now अगर मुझे formatting remove करनी है, so for that again I can either press here or Ctrl Z. Now if I click here once, so you will see जितनी भी हमने formatting के steps करे हैं उसमें जो last था that was जो हमने color apply किया था, तो single click पे वो color remove होगा. And similarly if I click it again तो उससे पहले जो formatting की थी वो remove होगी and so on. And अगर आपको एक साथ सारी formatting remove करनी है, so you will see यहाँ पे जो हमारे पास undo button है इसके साथ हमारे पास ये drop down है. So if I click on this, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है अंडरलाइन देन इटैलिक एंड देन बोल्ड. मीन्स ये सारी फॉर्मेटिंग हमने इसमें की है. एंड डायरेक्टली इफ आई वांट टू जंप टू बोल्ड, यू विल सी इफ आई मूव डाउन, अगर मैं सीधा जाके बोल्ड पे क्लिक कर दूंगी तो आप देखोगे नीचे हमारे पास लिखा हुआ भी आ रहा है अंडू 3 एक्शंस. मीन्स वो तीनों एक्शंस को एक साथ अंडू कर देगा. सो आई क्लिक ऑन बोल्ड एंड यू विल सी जो हमारा टेक्स्ट था वो जैसा था वैसा ही रिटर्न हो गया है. फाइन. नाउ दिस वाज अबाउट अनडू कमांड. अगर कभी ऐसा हो कि आप ठीक टाइप कर रहे हो एंड गलती से आपने कुछ फॉर्मेटिंग करके या फिर कुछ भी एडिटिंग करके उसको अनडू कर दिया है एंड इफ यू वांट टू रीडू इट अगेन, अब जैसे अगर मुझे फिर से इसमें फॉर्मेटिंग करनी है सेम, तो मुझे दोबारा से इसको सेलेक्ट करने के बाद सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई करने पड़ेंगे. इसकी जगह आई कैन यूज द रीडू कमांड ओवर हियर. आप देखोगे यहाँ पे अनडू कमांड के साथ रीडू बटन है. सो इफ आई क्लिक इट वंस, तो जो लास्ट इसमें फॉर्मेटिंग थी वो हो जाएगी. अगेन इफ आई क्लिक, तो ये ऐसे करते करते जितने भी स्टेप्स थे वो सारे रीडू हो जाएंगे. यू कैन ऑल्सो यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट दैट इज Ctrl Y. फाइन. नाउ वन लास्ट थिंग यू शुड रिमेम्बर, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी करते हो एंड वंस यू क्लोज इट, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के बाद उसको रीओपन किया तो आपके पास अनडू का ऑप्शन नहीं आता. एक बार कंट्रोल एस करने के बाद, सेव करने के बाद आप उसे अगर दोबारा से ओपन करोगे तो आपके पास अनडू का ऑप्शन नहीं होगा. फाइन. यू कैन यूज द अनडू कमांड अंटिल यू आर ऑन द डॉक्यूमेंट. जब तक मैं इस डॉक्यूमेंट में हूँ, जब तक मैं इस पे वर्क कर रही हूँ, मैं अनडू कमांड यूज कर सकती हूँ. वंस आई क्लोज इट, then I cannot undo any step. Fine. So this is it for this session. See you again in the next session. Till then, take care and bye.